Assalamu alaikum warahmatullah. Students of class 8th Government Boys High School Hanga. This is your science class, virtual class, and today we have to discuss the parts of a cell. As I have already told you that it is the cell which is the basic structural and functional unit of life. I have already made it clear to you students that as the bricks are the building blocks of a building or the units of a huge building, similarly the cells are the basic structural units or the building blocks of living organisms, maybe plants or animals. And today we have to discuss the parts of a cell. You know that all the life functions take place in every cell. A cell is itself made up of certain parts. Plant and animal cells are not exactly alike. For example, I'll show you a plant cell. Here it is. This is a plant cell, and this plant cell has these granular structures like this. Here it is. These are called the chloroplasts, and these chloroplasts like this, like this, like this, these granular structures like this, and these granular structures, they are called the chloroplasts, and they contain the chlorophyll, which is used during photosynthesis. Similarly, this sap-like structure like this sap-like structure, it is called cytoplasm. Okay, and this central body, it is called the nucleus of the cell. And here in case of plants, there is this large vacuole here. A large vacuole is present in plant. This plant cell, this is the permanent vacuole. Okay, and each cell is surrounded by a membrane. That membrane is called the cell membrane. And in case of plant cells, outer side of this cell wall is one more membrane. This is called the cell wall, and this is thick protective layer. It may be made up of pectin, it may be made up of cellulose, and mostly it is made up of cellulose. अब मैं आपको दिखाऊंगा एक सेल. दिस इज अनदर सेल. दिस इज एनिमल सेल. ये जो एनिमल सेल है, this also contains this sap-like structure here. It is this sap-like structure is called cytoplasm, and here it is the central body, that is called the nucleus. And here there is this vacuole, but this vacuole is not permanent. This is small, and this may be temporary vacuole. And this surrounding layer or the boundary, this is called the cell membrane. This cell membrane is semi-permeable. You will study in further classes, in your higher classes later on, what is semi-permeable, but you have to remember. So this was the structure of this plant and animal cell. Now we will discuss the parts of the cell. These all plant and animal cells have three cell parts. Mainly तीन सेल पार्ट हैं. एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस. और एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं. साइटोप्लाज्म जो है, जो अभी मैंने आपको सेल लाइक स्ट्रक्चर बोला, ये सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से. इट इज एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूइंग द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म मीन्स लिक्विड. क्या मैंने बोला? मैंने बोला द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म. ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये साइटोप्लाज्म है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं. फर्स्ट लिक्विड. प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. ये पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है ना, इसमें आता है.
इसी तरह 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय वेट इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादातर कौन कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 99% इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके अलावा फास्फोरस भी, सल्फर भी, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेन जो आइटम है इसमें वो है कार्बन। ये याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन इन माइन्यूट क्वांटिटीज। फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, दे आर आल्सो प्रेजेंट। और ये एलिमेंट्स जो है दे कंबाइन एंड फॉर्म वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। यही एलिमेंट्स जो आपने ऊपर पढ़े हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या जिनका प्रोटोप्लाज्म बना होता है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है। तो यही कंबाइन होते हैं और वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ द सेल, लाइक वाटर, इसी तरह है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड बाई टू दिस कंपाउंड। ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग इसीलिए है क्योंकि इसमें इतने सारे कंपाउंड्स हैं, यही इसको लिविंग बनाते हैं। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल से